Hello everyone. Today we are here with another episode of our podcast and we'll be discussing the key issues faced by the younger lawyers in the profession. To discuss these issues extensively, we have with us Advocate Aditya Parolia, who will be speaking on these issues with us. Mr. Parolia is an inspiration for the first generation lawyers. The last decade of his practice shows that he has left no stone unturned in getting justice to his clients. His involvement in commercial and consumer litigation is path-breaking. So we welcome you, sir. Please tell us, before getting into the practice of litigation, is pursuing an LLM a beneficial add-on? It's your personal choice. If you want to increase your knowledge base, definitely you can go for it. Is it mandatory? Certainly it is not mandatory. We have lawyers who have done excellent in our profession with just for doing their basic undergrad degree of a BA, LLB honors or whatever LLB honors are these days. So the masters is something which add on to your knowledge base, whether you are doing arbitration or you're doing corporate and financial services. It also gives you an exposure on how internationally or things are there in the legal fraternity or legal framework. It also gives us insight into the laws which are globally applicable. We have gone to a globalization stage and we have international disputes with people which are in cross territory. So certainly it's a benefit if you do it, that exposure is there. But is it mandatory? The answer is certainly no. For every law graduate, is it required to get into litigation or not? Of course, the answer is no. It is not mandatory for anybody to get into litigation. It's your personal calling. You can choose as per your own skill sets, whether you want to go into academics, you want to go into corporate, which have multiple practice areas, whether you want to do litigation, whether you want to go into some competitive exam and enter judiciary. There are thousands of options these days. So it's not mandatory. Yes, we have moved away from those traditional approaches which was there post-independence, that if you are a lawyer, the only option which you have is to get into dispute resolution or litigation. I think that's days gone by. Which court to start from? Is the exposure in the district courts better than that of the high courts? Again, no specific answer to that. To each his own. But better है आप lower court से शुरू करें. ज़्यादा एक्सपोजर है, आपको वेरियस केसेस करने को मिलेंगे, आपकी ड्राफ्टिंग इम्प्रूव होगी, आप यू विल बी एबल टू गेट इनटू द नुआंसेस ऑफ सिविल लिटिगेशन, क्रिमिनल लिटिगेशन. उसके बाद आपको शुरू से एक ट्रायल सीखने को मिलेगा. आप छोटे केसेस जो होते हैं, जो स्मॉल कोर्ट्स केसेस हैं, वो भी कर सकते हैं. यू विल get an opportunity to go there. You can do DV Act, you can do MV Act, you can do 138 cases as basic as that, and from there you can build on, and you will see a lot of people of younger generation there, so it will boost your confidence also. So it's much better if you start from a lower court in terms of exposure. What people do is when you come directly to High Court or Supreme Court, unlike Delhi High Court, not many high courts have their original jurisdiction. वो है ही नहीं. यहाँ pecuniary original jurisdiction है. So आप ट्रायल एक बार को शुरू से कर सकते हो. और कोर्ट्स में ऐसा है नहीं, और हाई कोर्ट्स में तो सिर्फ अपील्स आती हैं. So there's already a trial which has gone. इतना प्रोसीजर सीखने को नहीं मिलता. आप उसको सिर्फ एपलेट पार्ट पे रहते हो, तो वो आपको बाद में परेशान करेगा. जब आप सुप्रीम कोर्ट्स में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा या हाई कोर्ट में, तो फाइनल नुआंसेस ऑफ लॉ आप समझ नहीं पाएंगे. इसलिए हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है, अगर आप स्टार्ट करें, लिटिगेशन करना चाहते हैं, तो आप लोअर कोर्ट से करें. How can young lawyers improve their court craft? See, court craft is to be learned यार. विदाउट एक्सपीरियंस वो आएगा ही नहीं आपको. वो कोर्ट जाके ही सीखोगे आप. अब कोर्ट जाने के लिए एक क्या है, आपको इतने सारे कोर्ट्स हैं, आप लॉयर हैं, आप किसी भी कोर्ट में जाकर बैठ जाइए. कोई आपको स्कूल की तरह सिखाएगा तो है नहीं पेन और पेपर लेके. nobody will come and teach you like that. So you have to see other lawyers, how they perform, what kind of question they take if judge is not with them, if the judge is angry or in a very different mood, how to tackle it. So that is how you learn. Now तो आज we have the best option कि हमारे सारे courts VC में हो गए हैं, to the extent Supreme Court. So you can simply log into the VC and observe all proceedings that are there, and that is how you can build upon the practice also. उससे ज़्यादा teaching आपको books दे ही नहीं पाएंगी. आपको कोई भी कुछ नहीं सिखा पाएगा. सबसे इम्पॉर्टेंट आप जब खुद प्रैक्टिस करते हैं, उससे ज़्यादा टीचिंग तो आपको कभी कहीं मिलनी ही नहीं है. वो नहीं, आपके पास मैटर्स नहीं है उतने, और आपको लग रहा है टाइम है आपके पास, आप इंडिपेंडेंट काउंसिल हैं या किसी के साथ काम करें, तो अगर आप फ्री टाइम है तो आप कोर्ट में दीजिए. अगर आप ऑफिस में हैं तो आप
ऑन वर्चुअली लॉग इन कर लीजिए, वहाँ से देख लीजिए. सो दैट इज़ हाउ यू लर्न कोड क्राफ्ट, है ना. उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन आता है, अंडरस्टैंडिंग टेम्परामेंट ऑफ द जज, अंडरस्टैंडिंग कि कब आपको गुस्सा नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, रिपरकशंस क्या होते हैं किसी के गुस्सा करने के. तो ये सब चीज़ आप वहीं से सीख जाएंगे. कब आपको बोलना है, कब आपको चुप हो जाना है, कितना बोलना है, ये सब कोड क्राफ्ट में आता है. ये सब आप तभी सीखेंगे जब आप ग्राउंड पे होंगे. नो बुक कैन टीच यू दिस. So Aditya, please tell us that what is the fastest way of developing an expertise in an area? There is no faster way. It takes its own time. And I'm a very firm belief that you don't choose your expertise. People choose it for if you are a litigator. I'll tell you very frankly that what I have learned from people is that in litigation, you cannot say no to any kind of work which is coming at the initial stage. You keep on doing what you are doing. है ना. मैट्रिमोनियल आ रहा है वो कर लो, DV आ रहा है, आपके पास 138 आ रहा है वो कर लो. अगर नहीं आता है, तेरा 1000 ऑफ मेंटर्स, इतने सारे लॉयर्स हैं, कोई ना कोई आपको सिखाई देगा. आप जब ग्राउंड पे होगे अपने आप सीख जाओगे. हाँ, ये मत करना अपने ट्रेनिंग के चक्कर में आप किसी का इंटरेस्ट जेपरडाइज करते हैं. फास्टेस्ट वे तो कुछ है ही नहीं स्पेशलाइजेशन बनाने का. हाँ, अगर आप आर्बिट्रेशन कर रहे हैं तो अगर आप उस फील्ड में जाते हैं सपोज़, तो ये है कि आप उस डोमेन में रहिए, उसके बारे में पढ़िए, उसके बारे में जानिए. अगर आपको एक फील्ड चुननी है तो दैट इज़ द वे. और फास्टर वे आप कैसे चूज़ करेंगे? जब आपके पास उस डोमेन के क्लाइंट्स आएंगे तभी तो आप चूज़ कर पाएंगे. तो क्या होता है, जब आप एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे काम कर रहे होते हैं तो, और एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम के लोग आपके पास बार बार आते रहते हैं, तो आपका एक स्पेशलाइजेशन अपने आप बन जाता है. ऐसा नहीं कि मैं आज गया हूँ कि आज मैं सिर्फ बेल मैटर्स ही करूँगा. सो हाउ विल यू गेट इफ़ यू गेट वन क्लाइंट फॉर बेल, विल यू वेट टिल फॉर 1 year 6 months टू गेट अनदर क्लाइंट एंड यू से नो टू ऑल ऑफ दी अदर वर्क? दैट इज़ एब्सोल्युटली रिडिकुलस. तो वो तो आप करोगे नहीं. तो इसलिए हर चीज़ करो. फिर एक दिन ऐसा आएगा कि पब्लिक आपके पास एक तरह के पर्टिकुलर काम के लिए ज़्यादा आएगी, दूसरे कामों के लिए कम आएगी. तो ऐसे आपका स्पेशलाइजेशन बन जाता है. और ये है कि आपको जब लगे कि ये मेरा स्पेशलाइजेशन बन रहा है तो आप उस अपने क्राफ्ट को और शार्पन करते रहिए और इम्प्रूव करते रहिए बाय रीडिंग अबाउट द सब्जेक्ट, बाय लर्निंग मोर लॉज, उसके जजमेंट्स. ये इसी तरह से आपका क्राफ्ट बनता है. There are times that when a client approaches you, you're not very pro in that specific field which he is approaching you for. So in that specific scenario, how do you handle that? If you tell me, I say no, कि मुझे नहीं करना है, क्योंकि अगर वो मेरा डोमेन नहीं है तो मैं फालतू में उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करूँगा. एंड लॉयर एट माई स्ट्रेचर दे विल चार्ज गुड अमाउंट ऑफ फी. तो वाई टू वेस्ट आवर एनर्जी एंड टाइम rather than I can have 2-3 other cases and do it, and it will be much more in the interest of the client कि मैं उसको मना कर दूँ. So I generally refer it to somebody else. But अगर आप यंग लॉयर हैं, आपको लग रहा है काम नहीं आ रहा, आपको लगता है आप ये काम पे डिलीवर कर सकते हो या किसी भी तरह से कर सकते हो, और आपको उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो नॉलेज बेस डेवलप कर लो. आप क्लाइंट से मीटिंग करने से पहले उससे ब्रीफ ले लो, समझ लो क्या है, ताकि आप कर पाएँ. उसके बाद आपके पास हमारे लीगल फर्टिलिटी में आपको अगर आप चाहें तो मेंटर्स बहुत ईजिली मिल सकते हैं. बट एक हिचक है, आप लोगों में एक ईगो भी कह सकते हैं, वो जाते नहीं लोगों से पूछने कि ये मैटर कैसे हो सकता है. उनको लगता है कि लोग जज करेंगे. प्लीज़ अंडरस्टैंड, कोई जज नहीं कर रहा. आप 23-24 साल के लॉयर हो, कौन जानता है आपको? क्यों जज करेगा आपसे? क्या ही मिल जाएगा उसको आपको जज करके? तो सिंपल है, आप अपना काम करिए. आपको हेल्प चाहिए, हेल्प मिलेगा. आपको जो भी असिस्टेंस चाहिए, आप दूसरे लॉयर्स को ऑन बोर्ड ले सकते हो, अपने कलीग्स को, अपने दोस्तों को, अपने पीयर्स को, सर ये मेरा मैटर है, इस तरह से हेल्प कर दीजिए. क्योंकि इनिशियली आपका काम, आपका इंटेंशन सिर्फ फ़ी कमाना नहीं है ना. आपका इंटेंशन है कि आपका एक स्टैंडिंग, एक बेस बन जाए, है ना. उसके लिए आपको अच्छा डिलीवरी भी करना पड़ेगा. सिर्फ फ़ी कमाना से तो नहीं चलेगा. तो आपने फ़ी ले लिया, फिर मैटर नहीं आता, उस पर डिलीवर नहीं किया, तो आज एक बार क्लाइंट आ गया, फिर नहीं आएगा, ऊपर से आपका करियर जेपरडाइज हो जाएगा. आपके खिलाफ बार काउंसिल में कर दिया. तो आप पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं, दोस्तों से हेल्प मांगिए, देन उसको डिलीवर कीजिए. तो इस तरह से आप कर सकते हैं इफ़ यू आर अ यंग लॉयर. हाँ, सीनियर लॉयर्स मेरे ख्याल से सब लोग मना ही कर देते हैं कि नहीं कर पाएंगे. सो जैसे कि आपने कहा कि मेंटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और यंग लॉयर्स को सीनियर्स के पास ज़रूर जाना चाहिए व्हेनेवर देयर इज़ अ डिफिकल्ट केस इन हैंड. So what are your opinions on apprenticeship? Is it important for a young lawyer to go ahead with that? See, in my case, I did not do that after I passed law because I had done substantial amount of internships when I was in college. But that is not per se what you call apprenticeship. But important है, आप किसी से थोड़ा बहुत काम सीख लेते हैं, कि बेसिक सीख लेते हैं, तो बहुत important है. कम से कम अगर आप
लिटिगेशन कर रहे हैं, इतना तो पता होना चाहिए फाइलिंग काउंटर कहाँ है, कि वकालतनामे पे कौन सा स्टैंप लगता है। बेसिक किसी भी फील्ड में जैसे जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सीधा क्या बात करते हैं कि मैं लॉ सीख जाऊँ, सीधा मैं लॉ जाके आर्ग्यूमेंट कर लूँ, सीधा मैं जाके कोर्ट में बहस कर लूँगा, सब कुछ कर लूँगा। बेसिक क्या है, पहले वो फाइलिंग करना, वो ड्राफ्ट बनाना, ड्राफ्टिंग करना, वकालतनामा में क्या स्टैंप लगता है, कितना वेलफेयर लगता है, कौन सा एफिडेविट है, एफिडेविट नोटराइज होगा, अटैच होगा, कैसे उसके डिफेक्ट क्लियर होंगे। जब डिफेक्ट क्लियर होंगे फाइलिंग काउंटर पे, तब तो आपका अंदर पहुंचेगा ना फाइल, तब तो आप आर्ग्यू करेंगे। बिना इन सब चीज़ों का आप कहाँ से आर्ग्यू कर पाएंगे, है ना। तो ये बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है किसी के लिए भी, इसलिए अप्रेंटिसशिप करने के लिए एक बार राय दी जाती है, ताकि आपको ये सब क्लियर हो जाए। अब जो क्लर्क सिखा सकता है वो कोई नहीं सिखा सकता। यू हैव, आपके फाइलिंग सेक्शंस कहाँ हैं, फाइलिंग हो गए हैं तो आपके कोर्ट के सेक्शन कहाँ है, आईपीआर का सेक्शन कहाँ है, ओरिजिनल कोर्ट का जो कहाँ है, रिट का कहाँ पर है, कोई किसी और मैटर का कमर्शियल सूट्स का कहाँ पर है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। एक कॉरिडोर है जो कि कॉरिडोर्स हैं उन कोर्ट्स के कि जो आप जिसमें गुम हो जाएं, भूल भुलैया कहते हैं उन्हें, वो कॉरिडोर्स कहाँ पर हैं। जब तो ये चीज़ें के लिए आपको अप्रेंटिसशिप करनी पड़ेगी। दूसरा, क्लाइंट डीलिंग के लिए, क्लाइंट्स को क्या बोलना है, क्लाइंट्स को कैसे बात करनी है, आपको कोर्ट में किस तरह से अपने को प्रेजेंट करना है। बहुत सारे यंग लॉयर्स होते हैं, वो ड्रेसअप प्रॉपरली या ड्रेस नहीं पहन के आते तो कोर्ट जजेस डांट देते हैं। तो वो सीखने के लिए, है ना, आपको अपने पीयर्स को किस तरह से ट्रीट करना है। क्योंकि आप जब देखेंगे क्या होता है, जब यंग लॉयर्स बहुत लड़ते हैं कई बार कोर्ट में, और आप सीनियर्स देखो कभी अंदर थोड़ा बहुत कुछ कह भी दें, बाहर आके दोस्तों की तरह डील करते हैं, मेरा फर्टर्निटी आफ्टर ऑल। तो ये चीज़ सीखनी पड़ती है आपको अप्रेंटिसशिप में, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ना। तो टू ईच इज ओन, बट करनी चाहिए। Like you just mentioned that apprenticeship programs have their own benefits. So the young lawyers are always a little skeptical about where to start it from. Is it more beneficial to do it with an AOR or with senior designated lawyers? The benefits from there are more. See, my point is, if you are starting in your profession now, not to join a designated senior, because there is no opportunity to draft. Okay, you just have a brief जो किसी से बन के आया है, आप उनको ब्रीफ कर रहे हैं, आप उनके साथ ब्रीफिंग में जा रहे हैं, क्लाइंट इंटरेक्शन भी नहीं है, और आप बिल्कुल फ्रेश लॉयर हैं, तो आपके लिए बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है मेरे हिसाब से। और मेरा ये मानना है कि आप AORs को भी तुरंत ज्वाइन ना करो, एंड यू गो टू द लोअर कोर्ट, फाइंड अ लॉयर who practices on the original side, और या प्योर क्रिमिनल लिटिगेशन कर रहे हो, या कोई ऐसा यंग लॉयर हो जिसकी स्टैंडिंग 7-8 साल हो गई है, उसका हर तरह का काम हो, ताकि आप भी हर तरह का काम कर पाओ। सी, 2-3 ऑप्शन है, आप या तो लॉ फर्म ज्वाइन कर सकते हैं, या आप किसी यंग लॉयर को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप किसी डेजिग्नेटेड सीनियर को ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस आते हैं सैलरी को लेके कि कौन कितना सैलरी दे रहा है, बट आपको पता है लिटिगेशन में ये थोड़ा चैलेंज है ना। आप लॉ फर्म ज्वाइन करेंगे तो आपको सैलरी अच्छा मिल जाएगा, बट आपका एक्सपोजर बहुत लिमिटेड रह जाएगा, आपको आर्ग्यूइंग का चांस शायद ज़्यादा ना मिले। दो हम अपने ऑफिस में ट्राई करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आर्ग्यूइंग का चांस मिले, बट ऐसा हर जगह नहीं है। तो मेरा ये मानना है, अगर आपने सोच लिया कि आपको लिटिगेशन करनी है एंड दैट इज़ योर कॉलिंग, है ना, तो आप ऐसे लॉयर को ढूंढिए जिनका ओरिजिनल साइड पे अच्छा खासा काम हो, क्रिमिनल या सिविल हो, और शुरू से आप सीख पाएँ, चाहे आप सैलरी पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर पाएँ। क्योंकि ये जो अगर आप 6 महीने भी काम करेंगे या 8 महीने भी करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ बेसिक्स आप ये क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो और आप कोर्ट पे ऑन ग्राउंड रहेंगे, जब तक आप ऑन ग्राउंड है ना, तो जो आपको वहाँ टीचिंग मिल सकती है फ्रॉम स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग, कि वो फोटोकॉपी वाला कहाँ बैठा है, प्रिंटर कहाँ है बैठा है, या आपको किस तरह का आपको क्लर्क से कैसे काम निकलवाना है। So now that you've mentioned the benefits of apprenticeship programs, can you also tell us the merits and demerits of joining a firm? Because we often see the young lawyers are very much attracted to to joining new firms, bigger firms. Yeah, I must say this is a very stupid thinking of everybody. बहुत ही नादान सवाल है, कुछ सही और गलत है ही नहीं। There is no right and wrong. Whatever suits you and continues, that is right. Whatever doesn't suit you and doesn't continue, that's wrong. अब ये आप पे कि आपको क्या सूट कर रहा है, कि लॉ फर्म जाना है, लिटिगेशन जाना है। ऑफ कोर्स लॉ फर्म्स में ज़्यादा पैसे हैं, एक्सपोजर कम है, होता है, एक पर्टिकुलर डोमेन में आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, एंड देयर आफ्टर यू हैव टू ब्रीफ सीनियर्स, उसका एक्सपोजर अलग है। आपको शायद आर्बिट्रेशन करने को मिले, यू कैन गो टू पेरिस, लंदन। अगर आपको उस टाइप का प्रैक्टिस करना है डिस्प्यूट्स में, तो आप वो कर सकते हो लॉ फर्म्स के साथ, वो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है।
अगर आपको बिल्कुल ही प्योर लिटिगेशन कोर करना है तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि हर कोई सोचता है ये सही है और वो गलत है, ऐसा है ही नहीं। आप और ये कहता है कि मैंने अगर ये कर लिया तो मैं दूसरी चीज़ नहीं कर पाऊंगा, अगर फर्म में चला गया तो कोर्ट्स नहीं, लिटिगेशन नहीं, कोर नहीं कर पाऊंगा, या कोर्ट चला गया तो लिटिगेशन, ऐसा है नहीं। आप कभी भी स्विच कर सकते हैं, बहुत ईजिली कर सकते हैं। ये जो अनड्यू प्रेशर आप सब लोग अपने आप पे डालते हैं ना, यहाँ ये प्रॉब्लम है। तो मेरा मानना है देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग हियर, whichever suits you, choose that option and go with it. If it is working for you, fine. If it is not working, choose the another option and then go ahead. Tell us the main idea of litigation. What do you think litigation is, and what are the key challenges that are awaiting a first generation lawyer, because we are sure that you faced it all? By the time you reach a particular age or standing, आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो concept और term है litigation, ये अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है। इसमें वेरियस डोमेन्स हैं। कई लोग सिर्फ आर्बिट्रेशन कर रहे होते हैं, कई लोग सिर्फ ट्राइब्यूनल्स में काम कर रहे होते हैं, कई लोग एपलेट कोर्ट्स में गए होते हैं, कई लोग डिस्प्यूट सिविल कर रहे होते हैं, कई लोग सिर्फ एनवायरनमेंट मैटर कर रहे होते हैं, कई लोग सिर्फ एक आपकी इलेक्ट्रिसिटी मैटर कर। इन सब के अम्ब्रेला को जितने भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, दो लोगों के बीच में जो लड़ाई हो रही है और वो कोर्ट जा रही है या किसी भी एजुडिकेशन प्रोसेस में जा रही है, उसे लिटिगेशन या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहते हैं। पहले ये था कि यू कॉल लिटिगेशन जो भी कोर्ट्स में चल रहा है, बट दैट इज़ नो लॉन्गर द डेफिनेशन, इट्स वेरी ब्रॉड। सो व्हेन पीपल कम टू मी एंड से हमें लिटिगेशन करना है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है किस डोमेन में करना है ना। क्योंकि हमारे यहाँ खुद हमारे ऑफिस में इतनी सारी टीम्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं, जो NCLT जा रही हैं, जो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स कर रही हैं, जो कंज्यूमर डिस्प्यूट कर रही हैं, कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये सब लिटिगेशन के अंदर आता है ना। और आपका जो दूसरा सवाल है, व्हाट आर द चैलेंजेस, सी एक तो ये ना जो फर्स्ट जनरेशन वाला अननेसेसरी बैकपैक हम लेके घूम रहे हैं। आई एम ऑल्सो फर्स्ट जनरेशन, बहुत अच्छे लॉयर्स हैं, और जब कोई भी अच्छा लॉयर कभी बना तो वो फर्स्ट जनरेशन, कोई ना किसी ना किसी ने फर्स्ट जनरेशन से शुरू किया है। उनके अपने प्रेशर हैं, उनके अपने चैलेंजेस हैं, सेकंड जनरेशन के अपने, थर्ड के अपने, सबके अपने सेट ऑफ चैलेंजेस हैं। हाँ, सेकंड वालों को थोड़ा क्वेश्चनिंग मिल जाता है, बट उनकी एक प्रॉब्लम है कि सब उनको उसी यार्डस्टिक से नाप रहे हैं कि ही शुड डू एज गुड एज हिज पेरेंट्स वर डूइंग और ग्रैंडफादर वाज डूइंग। सो वो चैलेंजेस हैं। थर्ड जनरेशन हो जाता है तो उसके और चैलेंजेस हो जाते हैं, उसके ऊपर दो अच्छी जनरेशन गई हैं, सो उनके अपने सेट ऑफ चैलेंजेस हैं। हाँ, फर्स्ट जनरेशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप बड़े सिटी में, अगर हम सिर्फ दिल्ली और मेट्रो सिटीज़ की बात करें, या कैसे सेट कर पाएंगे, है ना। हम लोगों को कई बार इधर से हट के, मैं सोचता हूँ, मैंने देखा है कई सारे लोगों ने अपने डिस्ट्रिक्ट और होम टाउन जाके बहुत एक्सीलेंटली परफॉर्म किया, अगर आप सिर्फ मनी के पैरामीटर्स पे नापें। लेकिन हम क्या करते हैं, किस पैरामीटर्स पे नापते हैं कि वो सीनियर डेजिग्नेशन के पैरामीटर पे, कि जजशिप ऑफर हो गई उस पैरामीटर पे। बट अगर आप सिंपली क्लाइंट्स के और इस पैरामीटर पे नापें तो आप कहीं भी एक्सेल कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट जनरेशन हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कहीं कोई भी जनरेशन हो। और स्पेशली मेरा ये मानना है फर्स्ट जनरेशन के लिए आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अच्छी तरह कोई भी काम आए उसको डिलीवर करना। अपॉर्चुनिटीज़ विल, इफ़ यू आर कंसिस्टेंट एंड कीप ऑन डूइंग योर वर्क, once opportunity will always come and knock on your door. You just need to wait for that very moment and grab that opportunity. How important is the English language in this profession? It depends where are you practicing. When I started, I was very bad in English. Still am, not that fluent. But see, people who are coming from small towns, who have their English will always be a challenge, huh? But languages can be learned, na? I've seen people learning French, German at the age of 40, 50. Think about a 21-year-old, they can easily learn that English, na? They can easily learn diction, they can easily improve their vocab. But that is only if you are practicing in high courts and Supreme Court. If you are practicing in lower court, it is not required. So unnecessarily creating a pressure about it, even if you are practicing in lower courts, I don't see that as a point. But yes, if it is you're working in high court or you're working in Supreme Court, and I think in some high courts you don't even require it when you're in the Hindi belt. If you go down south, people argue in their own languages in those respective high courts.
But if you are practicing in Delhi or in metro cities, it is certainly important that you keep on improving this skill. But it is not mandatory that only if you know very good English, then you should try to choose law. And if you cannot argue, you should go and do some corporate or some other work. I'll give you a very good example. Mr. Palkiwala had a stammering problem, I've read. Yet he became one of the most legendary lawyers of our country. I know so many senior counsels or advocates or even judges who come from the Hindi belts, and still you can see the problem in their diction. There's a diction, but you can't be a grammar Nazi. You just be comfortable in what you're saying. If you're saying something with the right approach in a right manner and learning basic vocab, that will do. It is not important for you to learn ki, my lords, I beseech you, and etc. etc. You can say, my lords, please. You can use such words. There is no harm. How can people who are ambitious about arguing, how can they excel in that specific area? Simple, they go and argue the matter, improve the court craft. That is all what is required. Problem is you make a issue or you make a demon out of nothing. Nothing is unachievable. You can go and argue a matter. It's just that when that fear of addressing the court goes away, that day you will become a lawyer. For that can only happen when you are comfortable with the brief in your hand. You are thorough with the brief. You have practiced that brief well. That's all. What should be the basic setup for young lawyers before starting the practice? And what are your views on the gestation period? Basic setup, one band, one black coat, one white shirt, one black blazer. That is the basic setup if you want to become a lawyer. Okay? Then you can build upon it. You don't need iPads, you don't need cars, you don't need SCC or all these books. You just need to be comfortable with what you have, go and deliver. And the most important requirement is the client. Okay, you can come in a bus, you can come in an auto, but if you have clients, you are a good lawyer. That's all. What basic setup is required? Now people think that one day they will have huge amount of money, they will buy an office or a chamber, or they will have 2-3 associates, then they will go and buy those SCC books, then they will go and buy iPad, then they will buy printers, then they will open the office. It's not required. You just need a table, chair and your black coat attire, that's all. Okay. Now everything is virtual, you can argue from your home also. And what are your views on the gestation period? My views on gestation period is that it is there. It is there, and it is there with every professional. Whether you are a doctor, whether you are a lawyer, whether you are a chartered accountant, no matter who you are, gestation period will be there. It's just that you have to endure that. You have to अंडरस्टैंड कि ये रहेगा ही रहेगा. देखो क्या है, बहुत सिंपल बात है. हम हर चीज़ को एक बहुत बड़ा हर्डल बना देते हैं और फिर वो हर्डल हमसे क्रॉस होता नहीं है, फिर हम प्रॉब्लम कहते हैं. आप ये कहोगे कि सर आप लॉयर्स बन चुके हो, आप लोगों ने एस्टैब्लिश कर लिया, चाहे फर्स्ट जनरेशन हो, तो आप बहुत ईजिली बोल पा रहे हो. ऐसा नहीं है. हमारे अपने सेट ऑफ हम द सेम चैलेंजेस वी फेस्ड. It's just that we delivered when the work came, and we kept on delivering. The more work came, then we kept on delivering more and more work came, and that is how everything got done. अब मुझे तो पता ही नहीं कब जेस्टेशन पीरियड शुरू हुआ, कब ख़त्म हो गया, कब नहीं है. और हर एक का जेस्टेशन. अब आप अच्छे लॉयर एस्टैब्लिश हो जाओ, फिर आपको लगेगा मैं सीनियर कब बनूं, फिर वो आपका जेस्टेशन पीरियड है. आप अच्छे सीनियर बन जाओ तो आपको लगेगा मेरे को कब कॉलेजियम कॉल करे, कब एलिवेट करे हाई कोर्ट, तो वो मेरा जेस्टेशन पीरियड है. तो ऐसा कोई जेस्टेशन पीरियड की प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम थिंकिंग की. इट्स टू डू विथ योर हाउ यू सी थिंग्स. आर यू अ पॉजिटिव पर्सन, आर यू अ नेगेटिव पर्सन? If you think that I can go and get one client today, your gestation period is over. That is all. You just need to get that one client and deliver. Maybe he gets you the second clients. Then that second will get you third one, or you get third one. So that is what will end your gestation period. What are the glamour points of litigation? Glamour is coming on such shows, being asked questions, being relevant. That is the basic glamour. People come on news channels, people remain relevant in the society, they are reverend in the society as he or she is a lawyer. वो है glamour litigation का. Plus if you become a very good litigator, and if you have seen very good litigators,
they are affluent people. They have good fees. They make good earnings. Then these good litigators, and it opens your door to various things. Politics. We have best of the politicians. Many founders of our country, they have been lawyers. Okay, from Sardar Vallabhbhai Patel to Pandit Jawaharlal Nehru, all of them were lawyers. Mahatma Gandhi was himself a lawyer. Now, that is not only in India, even abroad you will see a lot of people, they all were lawyers. है ना? So they have been there in the society since for a long time, and they have played important role in the society. Plus they are respected people in the society. So that is the charm of being a lawyer. If you ask me that nowadays people know that good lawyers or good litigating lawyers in Delhi make huge amount of money. Recently somebody brought out this Mr. Sibbal's fee schedule, whereby we saw that he's charging 1.25 or to 1.5 crores for an outstation matter for one hearing. So that is the glamour of litigation. Then your opinion is sought by so many people. On news channel you go, okay, your member of parliament of a city is coming, important doctors are coming, everybody is seeking your opinion, bureaucrats are seeking your opinion. So that is all the glamour is. And the most important thing which people miss, we dress very good. That can be also glamorous, huh? We certainly do. Now that you have mentioned a lot of glamour points here, can we also talk about the women representation in litigation? That's not so glamorous. That's what we are coming to. Women in litigation. Why? It is not that it's not glamorous or that was on a lighter vein, but yes, it's not there much. And the reason is that the question should be, or rather somebody should ask, if the fraternity as a whole, why it still remains to be a male dominated field? Is it the approach of fellow lawyers that is wrong? Is it the approach of the bench that is wrong? Is it that we don't provide a level playing field? Or it is that there's discrimination which is there? Or it is all of it combined? I think it is somewhere all of it is combined plays the factor. Plus, in our society, women have so many hats to wear in 24 hours, where same day she's a mother, same day she's a wife, same day she's a daughter-in-law, same day she's a lawyer, same day she's a homemaker, and same day she has to take care of her own parents also. There are thousands of things which are to be done. So maybe that makes it difficult. And the most important factor which we discount is that of motherhood is when they become parents. It's not with men per se if they are practicing, but women, they have to take a maternity break, and that impacts the practice. And nobody today will understand that why their lawyer is not there for 6 months, how the work will be managed. I think in that domain, the colleagues needs to be more supportive, and that is how we will do it. I find women lawyers to be one of the most inspiring set of lawyers. Whether my junior colleagues, my seniors or judges I've seen, they are one of the most compassionate people, most hardworking people I've seen. If you see their work, it's immaculate. You will not find much of the mistakes there. You will not find, and I'm talking about younger colleagues, not senior colleagues. You will find they are thoroughly dedicated. You will see that the way they see a problem, deal with it, that's unparalleled. At the end of and I've seen with my, if you break it down to the genders, male, female lawyers, for a moment I can expect a boy lawyer leaving the work and saying that kal de dunga. I have never seen it happening with any female lawyer in my office. If work has been delegated, it is always completed on time. We've seen that the benches have been very encouraging towards the younger lawyers. Certain advices like younger lawyers should not just carry briefs or become adjournment lawyers have been received by the bench. What are your views on this? My views are same. They should not just carry briefs. They should know what the brief is. As I said, whenever opportunity comes to you, you take it. The problem is that you keep on going and asking adjournments. And I see in the easiest of the matter, people go and ask adjournment. It's not because the senior has, most of the time the seniors ask them, but at times because seniors does not have that confidence that you will be
able to do it. In my office, if you ask for a adjournment or pass for me or my colleagues, I'll throw you out. Because I think if a brief has been given to you, you be prepared, you go argue it out and finish it. You are a lawyer, you can be as good as a lawyer as I am. It is as simple as that. If you constrain yourself with your own limitations, the world will constrain you. If you don't have confidence in your own abilities, the world will never have the confidence in you. If you think you can't do it, world will think you can never do it. It is all about कि आपके पास चांस आया है, अपॉर्चुनिटी आई है, उसे ग्रैब करो और उसके लिए हमेशा तैयार रहो. तो प्लीज़, और आई हेट दिस टर्म कॉल्ड प्रॉक्सी काउंसिल्स. इट इज़ नॉट इवन अ टर्म. If it was up to me, I'll throw that person out who says that I'm a proxy counsel or I'm so and so. It's a term which should be done away with. So coming to the next question, how do you think a younger lawyer can get clients? What is the key towards that? See, you are asking me a trade secret. I should not tell you this, how to get clients. Then you will poach my clients. The answer is very simple. That start from your home. Okay, I'm not saying you file a divorce matter between your father and your mother or something like that, or find a Fupaji and Buaji and say your Fupaji is bad, Buaji, I'll fight your case. Don't do that. Or you get a dispute between two brothers. You reach out to your family, friends, and tell them that you have started and this is what you do. If they get to know about it, they inform you. Start small. Okay, go and at least make an attempt wherever you are going. So people, what I often find is people go and socialize amongst the lawyers that if this lawyer is not doing the work, he will give it to me. Why will he give it to you? Who are you? Right? Who has more trust on you? Your family or this lawyer, the third party? So once they do it, and if you, as I said, if you fulfill your task well, if you do well, I think the clients will keep on coming. Your relatives will get to know about it. Your family will have more trust on you. So that is a basic way to get the clients. Okay. After that, you can socialize, you can meet people, and you can meet and then tell that what you have started. And you can meet what you call your classmates. So in college, all of you were lawyers. Your school, not everybody was lawyers. So you can tell them. So from there, you can get clients. That's very easy these days. The problem is that this apprehension कि मेरे को मिलेगा कहाँ से, क्या करूँगा, ये problem है. I've seen, see, I am a first generation lawyer. Okay, we must be having the highest number of clients in the country, if in terms of numbers. Okay, which by far people don't have. Okay, and I started from scratch. My family also was not the one which provided us the first clients. It came from outside. Then my brother started his own practice because we have a policy in our firm that no family is involved. He is now an AOR. He got his own set of clients with no help from us. So it can be achieved. It is not that difficult. You just have to go out, seek help. And it is as simple as that. What is the importance of pro bono cases in this practice area? Yeah, pro bono cases, my first case was pro bono. I did it for a driver of a neighbor, his ESI claim. And he got me at least 20 other clients later on. And I think so that can be, if you can say, power of the pro bono. If you are a young generation, at least you will be able to show that you have that caliber and capabilities of delivering. Apart from that, once you establish, I think it is your duty towards the society to do pro bono work. If somebody is in need and you have capabilities and capacities of getting him justice and you feel that he's aggrieved and is right, you should certainly take up pro bono matters. If that person is indeed does not have any money, or if that person, if you think that your help is required and nobody else will help you, you should indeed do that pro bono work. And I have a very certain belief, and which I tell everybody, that if you are a good human, good things will come to you. Okay, if you are good to the society, what goes around comes around, wala funda in this universe. And if you give good to the society, society will give it back to you. As simple as that. How important are panels in a first generation lawyer's career? It's not for a generation. It is, panels are important for every young lawyer, I believe. And I think that keeps you sustained in your litigation journey.
if you don't have your private clients. Once you have the private clients, I don't think so they are required, because you will not be able to dedicate that time. I remember that when at one point of time I had 11 to 12 panels, and I was doing a lot of work for them, but I gave it up the day I had good amount of private clients, and I stopped taking any work and returned all the briefs. Why panels are important? Because it keeps you in touch with the litigation, it keeps you visible in court, it builds your presence, that court craft you're talking about. That is why they are very important. It's not very difficult to get a panel. If you can get it with your help of your senior, you can get it with your help of a relative, and if you can, you should certainly try for it and go for it. So please tell us, if a lawyer is not doing well in the litigation field, what other options does he have? He can do anything. He can be a stand-up comedian. See, Bassi, he's such a good stand-up comedian. He did not do very well in litigation. See, if you're not doing good, somewhere change, na? Why to be stuck there? If you feel that is not your calling, change it. As simple as that. If you are not doing well in litigation, go to academics. Try to give a judicial entrance exam. Try your hand in corporate. Go in-house. The problem is that every young person thinks that if he keeps on sticking to one point of doing one thing, if he or she will do well. But you need to have a check on your own self. You need to be true to your own self. कि बॉस हो पा रहा है या हो सकता है या नहीं हो सकता है. अगर नहीं हो सकता है तो सिंपली चेंज योर प्रैक्टिस एरिया, डू समथिंग एल्स. स्काई इज नॉट फॉलिंग, नोबडी इज जजिंग यू, है ना. तो एज सिंपल एज दैट, है ना. सेम थिंग आई टेल एवरीबडी. जब यंग लॉयर्स पूछते हैं कि कुछ नहीं करते कि गलती हो जाएगी, तो मैं उनसे यही बोलता हूँ, कौन जानता है तुम्हें? हु केयर्स? आप गलती क्यों नहीं कर रहे हो? आप गलती नहीं करोगे, सीखोगे कैसे? और अगर आपको क्या होगा? आपको आज डांट पड़ जाएगी, जज से पड़ जाएगी, बॉस से पड़ जाएगी, बट कल आप ये गलती दोबारा नहीं करोगे और आप सीख जाओगे. आप जब तक कुछ करने से डरोगे तो गलत और सही का पैरामीटर कहाँ से लेके आओगे? तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आप करिए, टेक योर अटेम्प्ट. होगा अच्छा है, नहीं होगा तो और भी अच्छा है. मे बी देयर इज समथिंग बेटर स्टोर्ड फॉर यू. एज सिंपल. So before ending this insightful session, sir, can you please tell us 3 takeaways for younger lawyers before entering the profession? Before entering the profession, 3 takeaways. Well, there's information everywhere and it's free of cost. Whether you go online, you can see VC online, you can go to court. It is free. You can learn, and you need to explore yourself. You need to be true to yourself. Whether litigation is for you or not, whether corporate is for you or not, because ultimately litigation is very challenging. I feel it is 10 times more challenging than doing a corporate work in a law firm, because here you have to find your own client, build your own setup. You need to you need to go before a judge, you need to argue the case, do n number of things. So it is much more challenging as compared to corporate work. So one, be ready whether it is your calling or not. That is most important. Second, if you think that it is for you, try to learn more work at the lower courts first. Try to see what all work is there. Don't restrict yourself to a particular specialization. Don't be in that framework that I will only do arbitration, I'll do only divorce cases or matrimonial cases, I'll only do what you call it commercial cases. Be open to all the avenues. Be open to every opportunity that is coming to you. And the third one, what can be the third one? Third one, I think people have stopped reading. People need to learn and read more. Okay, not WhatsApps but books. Improve your knowledge base, because in law all these things matter a lot. Whether you know history, whether you know the geopolitical situation, you know economics. So keep on improving yourself. If you know stuff, law is all about common sense. And history is how things have changed. So that is all which is required. Thank you so much, Mr. Parolia, for sparing some time and for this insightful session. And the pleasure was all mine, and I hope whatever I said provides some help to our younger lawyers. With this, we come to an end to another episode of our podcast. Do like, share, subscribe to our channel, and let us know in the comments below if you want us to cover any other video on any specific topic. Thank you.